यस फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर सीरीज में हम लोग नेक्स्ट 6th लेक्चर सीरीज है और 6th रूट है। इसके अंदर हम ये वर्ड ले रहे हैं आर्च मीन्स रूलर। ओके, और ये कहाँ से लिया गया है मैं अभी डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड कम से कम 100 वर्ड्स 100 वर्ड आप सीख सकते हैं, इतना विशाल है ये वर्ड। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, जिनको लर्न करने से आपकी वोकैबुलरी काफी वर्ड्स ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो आप देखोगे कभी फॉरगेट भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस वर्ड, क्योंकि ये जैसे ही आपको लर्न हो जाएगा कि बेसिक रूट इसका मतलब क्या है, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और आप देखेंगे एक वर्ड मैं यहाँ दे रहा हूँ जो कि नाउन है, बट नाउन की हेल्प से अगर नाउन है और एडजेक्टिव है, तो अगर एडजेक्टिव है तो आप नाउन बना सकते हैं, वर्ब बना सकते हैं, एडवर्ब बना सकते हैं, मतलब 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच और बना सकते हैं। इस तरह से 4 वर्ड्स तो आपको ऑटोमेटिकली हो गए। तो अगर मैं ये 10 वर्ड्स ले लेता हूँ, उसमें से 40 वर्ड्स तो ये हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं बहुत सारे, आर्क पर और आर्च मीन्स रूलर ही है, इस पर बेस्ड बहुत सारे वर्ड्स। मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा कि एक वर्ड और होता है, ये सेम वर्ड है, आर्च स्पेलिंग वही है, लेकिन वो लैटिन रूट आर्च से लिया गया है। इसका मतलब कॉन्शियसली रोगस, दैट मीन्स कॉन्शियसली रोगस मीन्स प्लेफुल, वेरी नेगेटिव सेंस है उसका, उस सेंस में भी यूज होता है। लेकिन यहाँ हम एज ए हेड ऑफ ए सोसाइटी, एज ए हेड ऑफ ए ट्राइब और हेड ऑफ ए फैमिली, हेड ऑफ किंगडम एटसेट्रा यहाँ यूज करना है हमें। लेकिन वो जो सेकंड मीनिंग है, उस मीनिंग को भी आप कंफ्यूज मत करिएगा, वो उसका मीनिंग अलग है, वो लैटिन रूट से लिया गया है, ये ग्रीक रूट से वर्ड लिया गया है। तो दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ, उसके बाद हम इस वर्ड को डिस्कस करते हैं। इसका बेस्ड 10 वर्ड्स हैं, इन 10 वर्ड्स पर बेस्ड और भी आप वर्ड्स बना सकते हैं। इस तरह से यू कैन एनहांस योर वोकैबुलरी बाय हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स एट दिस वन रूट। ओके, इस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करते जाइए एंड यू विल सरप्राइज दैट कितनी आपकी वोकैबुलरी पहले क्या थी और अब इसको समझने के बाद, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद में कितनी बढ़ जाती है। यू ऑटोमेटिकली विल सरप्राइज अपॉन दिस एंड सो मच बेनिफिशियल दीस रूट्स आर देयर। ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि रूट्स प्रीफिक्स सफिक्स को समझ करके डिक्शनरी पढ़ना, डिक्शनरी में से ये वर्ड सेलेक्ट करना, और आप थोड़ा सा रिसर्च करिए। मीन्स यू हैव टू बी ए रिसर्चर, ओके, सीकर ऑफ नॉलेज, तब आप लर्न ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ डिस्कस करते हैं, साथ साथ आप लर्न करते हैं, आप सर्च करते हैं डिक्शनरी में, अदर सोर्सेज में, जहाँ से भी आपको वर्ड्स मिलते हैं, रीडिंग में बहुत सारे वर्ड्स ये सेम आ जाएंगे, तो आप देखोगे कि उसका मतलब ये होता है, आप समझ जाओ है। उस तरह से आप जहाँ कभी आर्च वर्ड यूज होगा तो आप उसका मीनिंग तुरंत निकाल सकते हो कि क्या मतलब है उसका भाई। इसलिए इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए रूट्स को पढ़ना, प्रीफिक्स सफिक्सेस को पढ़ना, उससे वर्ड्स की वोकैबुलरी आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि यू विल बी अ मास्टर ऑफ स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, एवरीथिंग। ओके, कम्युनिकेशन के आप मास्टर बन सकते हैं। You will be master of communication. You will be a strong hold. You will have a strong hold upon the subject English पर। इसलिए आप इसको समझिए। चलिए हम आर्च के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये 6th रूट है, इसका मतलब आर्च है। दोनों वर्ड, अच्छा, इसको प्रोनाउंस हम कभी आर्च करते हैं, कभी आर्क करते हैं, डिपेंड करता है कि कहाँ से इस वर्ड को लिया गया। जब देखिए, इस आर्च का मतलब रूलर होता है। ये जो सेंस है अभी हमारा, ये ग्रीक रूट है, उससे लिया गया। रूलर टेकन फ्रॉम ग्रीक। कौन सा वर्ड है ग्रीक में? वो आर्चोज वर्ड होता है, ARCHOS, आर्चोस, दैट मीन्स रूलर। ओके, रूलर दैट मीन्स रूलर। इस आर्चोज वर्ड से ये आर्च वर्ड लिया गया है, ये ग्रीक रूट है इसका। यहाँ इसका सेंस हम यूज करेंगे ग्रीक रूट का ही। लेकिन दूसरा एक वर्ड होता है सेम, बट द सिमिलर वर्ड, आर्च, ओके, मीन्स this is consciously roguish or consciously roguish. If I write here roguish only, that doesn't mean this is the adjective again. Here use an adjective, consciously roguish. इसका मतलब है consciously जानबूझ करके roguish word, CONSCIOUSL by consciously roguish। जैसे इसका यूज
और ये कहां से लिया गया? लैटिन रूट से. It has been taken from Latin root, word with that arse, A-R-C-E, arsh, यहाँ से लिया गया. arse का मतलब है ये playful, that means playful, और roguishly, consciously roguish. This arse word means consciously roguish. ये जो आर्स लैटिन वर्ड है, इससे इस वर्ड को लेते हैं तो इसका नेगेटिव सेंस हो जाता है और उस नेगेटिव सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं. जैसे आर्च राइवल्स हैं, दे आर आर्च फ्रेंड्स, दे आर आर्च रूलर्स. ओके, आर्च रूलर, आर्च हेड ऑफ द सोसाइटी. ओके, और आर्च स्माइल, वेरी कॉन्शियसली स्माइल, वेरी व्हाट यू कॉल wrongful smile, consciously smile, that is consciously roguish smile, consciously roguish, that means arch smile. We can use the word as arch smile. ये वर्ड आपने बहुत ज्यादा यूज किया होगा, arch smile. He shown his arch smile, very roguish smile. Okay, consciously roguish smile. The person was smiling at you. That means not consciously, I mean in a playful mood or in a good sense, but in a negative sense. He was smiling at you. That means ये हो गया arch. Okay, this arch जब हम लैटिन से उठते हैं तो उसका मतलब consciously roguish सेंस होता है. ठीक है, प्लेफुल और कॉन्शियस. तो ये दो वर्ड हैं, ये सिमिलरली यूज होते हैं, आई मीन डिफरेंटली यूज होते हैं, अलग अलग सेंस दोनों में, लेकिन यहाँ हम इस सेंस को यूज कर रहे हैं जो कि रूलर का सेंस है. ठीक है, चलिए तो हम इसको डिस्कस करते हैं. इसके वर्ड्स लेते हैं, टेकन फ्रॉम ग्रीक रूट. ये हमने अभी लिखा आपको, ग्रीक रूट से लिया गया है. दिस इज ग्रीक रूट. क्या है ग्रीक और ग्रीक वर्ड, ग्रीक रूट आर्चुच. ये आर्चुच है, दैट मीन्स रूलर. चलिए अब इसमें वर्ड्स हम लेते हैं, डिफरेंट वर्ड्स. जैसे पहला वर्ड है पेनार्की. दिस इज पेन, आर्च, A-R-C-H, बाई, पेनार्की. पेन मीन्स ऑल होता है. ओके, दिस अगेन नाउन वर्ड है ये भैया. इसका मतलब है गवर्नमेंट बाई और. पेनार्की, जब कभी पेनार्की वर्ड आए इसका मतलब पेनार्की गवर्नमेंट बाई all. This is penarchy means government by all. ठीक है जी, पहला वर्ड. Second, penarchy. There is penarchy in his family. There is penarchy in his country. Penarchy means government by, or maybe democracy is there. If democracy is very successful, that means all people's sayings are, or I mean, whatever the people's problems are there, they are solved. Okay, so government by all, that when 100% voting is there in reference to a one person, that means penarchy. Penarchy means when people are having favorable king or ruler or prime minister or president in that country. That means penarchy is present there. Penarchy means government by all. तो ये penarchy हो गया. सेकेंड वर्ड देखें भाई, इस पर बेस्ड बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं. पेनार्की मीन्स, ये पेन मीन्स ऑल होता है, आर्की मीन्स रूल, तो पेनार्की मीन्स गवर्नमेंट बाय ऑल. ओके, इस पर पेनार्किक, पेनार्की, पेनार्सियस, पेनार्सियस, पेनार्किया, पेनार्सियसली. ओके, पेनार्किक एडजेक्टिव, देन पेनार्सियस नाउन हो गया था, है ना. इससे तीन और वर्ड्स बना सकते हैं. देन सेकेंड वर्ड देखिए इसको, एनार्की. एन आर्की, anarchy. N means negative sense. Anarchy means government by none. There is no government. Here it is noun again. क्या है मतलब इसका? A state without head, without ruler. A state without government. A state without government. Without government. A state without government. That is anarchy. There is anarchy there. Okay, in that country anarchy is there because nobody is a ruler there. Government by all, people are just fighting with each other because there is no head of that society, that there is no king in that country. So anarchy is present there in that country. Okay, anarchic society, anarchic tribe, anarchic family. The family is anarchic. So anarchy can be used in different senses, but it means government by all. Okay, so state, sorry, this is anarchy, but it is anarchy. Anarchy means there is anarchy in that country, there is anarchy in that family, nobody is head in that
society. Everybody is following his own rule. Nobody is stopping others. That means anarchy is there. Anarchy means person is not following any rule. That anarchy. Prime Minister, Chief Minister, anarchic head of any society. Okay, so that means anarchy. A state without government. When person is not following any constitution, any rule, that person is anarchic person. We say he is an anarchic person. Okay, he is an anarchy. Adjective can be used isolatedly also, without using noun. Sometimes they say he is an anarchic. That means anarchic person. Mr. Shyam is an anarchic. Okay, anarchic doesn't follow any rule in his regarding his health, regarding his family, regarding his whatever followings. That is how anarchic word is. So anarchy word देखिए इसी सेंस में बायोआर्की. अब अगर हम न्यूमेरिकल वर्ड लेते हैं तो बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे आपके इसी पर बेस्ड. बायोआर्की अगेन नाउन. दिस इज व्हेन government by two. When a head is, when two people are ruling over a country, that means hierarchy is there. Government by two. This is known as government by two. क्यों भाई? क्योंकि यहाँ by means two होता है, ये two. Archy means ruling. So ruling by two, government by two. This is hierarchy. Triarchy. If I write the triarchy, let me take fourth word triarchy, T-R-I, and then archy. The government by three, the triarchy. This word I have taken on my own. Number of words can be framed. If you know the numerical terms, triarchy, okay, pentarchy, sexarchy, sex, sex means six, septarchy, okay, octarchy, nonarchy, decarchy, deca means 10. So ruling by 10, or when there are 10 rulers in a family, in a tribe, in a society, in a country, that is decarchy. Okay, decarchy is present in that country. There are 10 rulers. Okay, so in this way, triarchy, बहुत सारे आप वर्ड्स बना सकते हैं. आप देखोगे कि आपकी डिक्शनरी full of, I mean, your mind will be full of words, different words. अगर आप न्यूमेरिकल टर्म्स जानते हैं, जैसे पेंटार्की हमने पढ़ लिया है, पेंटार्की अभी नहीं दिया, ट्रायarchy, biarchy, quadrarchy, ruling by four, when there are four heads or rulers, okay, government by four, then that is known as quadrarchy. किस quadrarchy? Okay, ये हमने biarchy लिया, biarchy. यहाँ पर हमने 4 वर्ड ले लिए, अपनी तरफ से एक और ऐड कर दिया, लेकिन अब हम यहाँ पर architect, this is taken in another sense, but मैं यहाँ पर हमने 4 वर्ड वो ले लिए थे, लेकिन अभी हम इसको 4 ले रहे हैं. मैं 10 वर्ड्स कह रहा हूँ, बाकी जो लिखूंगा वो गलत से लिख दूंगा. अब आर्किटेक्ट आता है. Who is architect? Question. Architect. Who is architect? Architect is the person, okay, or designer who designs. This is noun, okay, architect. The creator of a design, the creator of a design or plan, design or a plan for building, that is known as architect. For a building, to build a, okay, house, if there is a designer, that person is known as architect. Who is architect of Lutyens Delhi? I mean of the president house here in India. So that was Lutyens. Okay, that means Lutyens zone here, because the architect was surnamed as Lutyen. Okay, it is known as, because of that. So architect is the person, the designer, the planner, okay, the creator of the design. Sorry, that person is known as architect. So architect, archi here is regarding construction, regarding designing, regarding doing something. So this is fourth. Let me take now fifth one. Pentarchy. Here, sorry, Janarchy it has taken. तो यहाँ पर है Janarchy or Janarch. Who is Janarch? Janarchy
is the government by a single person in a family, and Janarch is the person. Okay, Janarch or Janarchy. Janarchy is the noun, abstract noun, and this is counting noun. This is countable noun. Janarch is the head of a family. The head of a family. That means single head is there, general head is there. Only single person is there, but that person is known as Janarch. He is the Janarch in his family. The head of a family. That is known as Janarch. Okay, so Janarch is the word is there. And sixth word, monarch. This is very important. We know what monarch means. Monarch is the king, ruling by one single person. Mono means single. Mono word is there. So this mono word, this is prefix here. Monarch is a noun. That means government by single person or one. A single ruler. This is known as a single ruler. A single ruler. Okay. A single ruler of a tribe. A single ruler of a tribe, family, okay, kingdom, anything that is known as monarch or kingdom. If there is a single, our एक single ruler है किसी kingdom का, उसमें monarch is monarch of this country. The person is monarch of this country. So the one single ruler is there. That is known as monarch, and that ruling is known as monarchy, because there is a monarchy in that country. There is single ruler there. There are the 6 words we have taken. अब जरा देखें next word 7th, 8th, 9th, 10th. इन 4 वर्ड्स को और डिस्कस करते हैं. इसके बाद हम और अपने आप बहुत सारे वर्ड्स आपको बताएंगे. इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं और आपकी अपनी डिक्शनरी इतनी बढ़ जाएगी. Your own vocabulary, your own word power will be strengthened, will be enriched by hundreds of words. Okay, in this way. Okay, now 7th देखें. 7th word है भाई matriarch. When this is matri, M-A-T-R-I, matriarch. Who is the matriarch? That lady is the matriarch in his family, in his tribe. Matriarch is the female head of a tribe. Matriarch, matri here means mother, related to mother. So matriarch, when mother or head of the society, that means mother mostly, is the head of that society. That matriarchy is prevalent in his family. Matriarchy is prevalent. She is the matriarch of her family. So in this way we can use matriarch. Matriarchy is prevalent in his family or in her family. Okay, so matriarch is when female head of a tribe. That is known as the female head. Matriarch. Who is matriarch? The female head of a society. The female head of a family or tribe. Family or tribe. So the female head, that is matriarch. Matriarch person is the female head of that family. Okay, अब देखिए next word. 8th word देखें आप. 8th word. 8th is patriarch. Similar word है उससे related. This is patriarch. अब ये क्योंकि matriarch, patri is for father. When father or male is the head, he is the male head. Male head of a. This is male head of a family or a tribe. That person is patriarch. Patri means father, is related to father. This prefix is father here. For father it has been used. Okay, so father, patriarch is there.
male head of a family, male head, that is known as patriarchy. Patriarchy is prevalent in his family. He is the patriarch, and patriarchy is the ruling, okay, the governing system of that family or in that family. That's known as patriarchy. This is patriarchic, okay, patriarchous, patriarchic, and patriarchously. That is patriarchously at birth. So he is behaving as patriarchously or patriarchally with the male head of a family, that is of a tribe. This I have written down here. The male head of a and this is patriarch. Ninth word, see here. The ninth word, oligarchy. Ninth word is oligarchy. Oligarchy. Yeah, oligarchy. Noun again. This is whenever CHY or Y is there, that means that noun, which is abstract noun, cannot become the activity. Okay, that is abstract noun, means uncountable noun. Okay, the oligarchy is the government in the head of it or in the hands of a few. That is oligarchy. When the government is in the hands of a few, that means oligarchy. Government in the hands of a few. In the hands of few. A few is negligible people. But even then, those people are more than two. I mean, two or more than two. Two or more than two. At least two are there. That means a few. A few means very little. Very little. Okay? Not so. Very little, but it's little. That means little number or a very few number. A few means two or more. Two or three. I mean, two or more means at least two people are there. 2, 3, 4. In comparison to others, if only 2 people are ruling, 3 people are ruling, even that is also a few. So oligarchy is the government in the hands of a few. That is oligarchy. Oligarchy is prevalent in that country, in that society, in that tribe. We can use in that way. So, oligarchy. So here is oligarchy in his office. Because some few people, 3 or 4 people are ruling the whole government, the whole company. The whole company is governed by 3 people only, by 2 people only. Husband and wife both are ruling. That means a few. That oligarchy is there in that company, in that society, in that government. Oligarchy. Now 10th word. Here we are taking the last word, pentarchy. As I have talked about already, pentarchy. Pent means 5 here, and archy. Pentarchy is the government by 5. Pentarchy is government by 5. Government by 5 rulers. Government by 5 rulers or 5 members. 5 rulers or 5 people. That is pentarchy. Now let me take some more words which you can discuss about. Kksharma. This is SEXARCHY. It's the capital word. Kksharma. Sex means here 6. That means 6 here. Kksharma. Government by 6. By 6 people. Then septarchy. SEPTA. Septarchy. I am writing in small letters. Septarchy. Okay, this is again noun. Octarchy, nonarchy, decarchy, centarchy, C-E-N-T, centarchy, C-E-N-T, centarchy, C-E-N-T-A-R-C-H-Y. Centarchy means government by 100 people. Okay, that is known as centarchy. So in this way you can find out thousands of words. Okay, adjective, then noun, adjective,
verb, adverb. These four parts of speech are 100% true. We can find out them. Okay, number of words are there. This, if you are very much good at numerical words or numerology, then you can find out different other words. Government by few, government by 5, government by 6, government by 7. तो बहुत सारे वर्ड्स आप मिल सकते हैं। इस तरह से आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी इस एक वर्ड की वजह से। आप समझोगे आप कि भाई ये आर्क मीन्स रूलर तो बहुत अच्छा है। इससे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। आप देखोगे कि आपकी बहुत सारी डिक्शनरी बढ़ जाती है। आई मीन यू विल इंक्रीज योर वोकैबुलरी बाई हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स इन दिस केस। मैं तो आपको बता सकता हूँ कि अगर आप क्वांटम नंबर, क्वांटिटी और मैथमेटिक्स जानते हैं थोड़ा सा, तो इन न्यूमेरिकल वर्ड्स को यूज करते हुए आर की लगा दीजिए पीछे। जैसे पेंटार की लगाया हमने, पेंटार की, सेक्सार की, सेप्टार की, ऑक्टार की, नॉनार की, देन ट्राइसेंटार की, बाइसेंटार की, मीन्स 200 people are ruling. That means bicentarchy. Okay, bicent means 100, centarchy. Okay, so government by 100, government by 200, government by 300. In this way you can frame number of words. Okay, इस तरह से आप देखोगे कि आपकी वोकैबुलरी थाउजेंड्स ऑफ वर्ड से इंक्रीज हो जाती है। एक रूट से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है और आपकी लाइफ में हमेशा आता रहेगा जब कभी आप। और ये इंपॉर्टेंट किन किन लोगों के लिए, एक तो बात है कि जो भाई इनके बारे में मोस्टली डेमोक्रेसी भी पढ़ते हैं एंड पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपके रूलर के लिए। और दो पीपल हु आर स्टडिंग या constitution of a country, for lawyers mostly this word is very important. Who is ruling here, who is the ruler of this country, okay, or which ruler is very much famous of which country. So ruling related to wherever ruling is there, either in the society, in the tribe or in a country, that ruling is denoted by this word rule, arch. So arch is ruler here, taken from Greek root archos, that means ruler. Okay, and as I compare, भाई ये वर्ड उस वर्ड से मिलता है जो लैटिन से लिया गया है, आर्स, ARCE, दैट आर्स वर्ड से लिया गया। उसका मतलब कॉन्शियसली रोगिश वर्ड होता है, वो बहुत ही प्लेफुल। व्हेन मीनिंग आप नेगेटिव सेंस में देते हैं उसका, तब हम उसको एज ए आर्च राइवल, आर्च स्माइल, ओके, आर्च प्ले, आर्च गेम और एनी ट्रिकी गेम, दैट विल बी सेंस। ओके, सो इन दैट वे वो जो वर्ड है आर्स वाला जो कि लैटिन से लिया गया, उससे भी बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि दो वर्ड है बेसिक। आर्च वर्ड था, इसको दो सेंस में, कभी कभी ये प्रोनाउंसिएशन इसका आर्क होता है, ARK आर्क, कभी इसका प्रोनाउंसिएशन आर्च होता है, ARCH, एनार्किक, ओके, एनार्की, ओके, देन आर्च बिशप और आर्क बिशप, ओके, बिशप इज द हेड ऑफ दैट आर्क बिशप, so archbishop is there, that is archbishop. Then arch when used, so pronunciation may be either arc or arch, both are acceptable, it depends upon some word. Okay, तो आपने देखा कि ये जो रूट वर्ड है, आप देख रहे हैं कि इससे काफी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाती है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको ये रूट बहुत ही एप्लीकेबल है। आप इसको पढ़िए, समझिए, डिक्शनरी लेकर के आप उसमें से वर्ड्स छांटिए और आप देखोगे कि आपको इतने सारे वर्ड्स मिल जाएंगे कि आप ये 10 वर्ड्स के अलावा जो मैंने अभी 15-16 तो ही बता दिया आपको, है ना। जरा न्यूमेरिकल वर्ड जानते हैं तो बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। सेंटार्की, ओके, ट्राई सेंटार्की, बाई सेंटार्की, देन पेंटार्की, बाई पेंट सेंटार्की, ओके, और क्वीन क्यू सेंटार्की, दैट मीन्स 500 रूलर्स आते हैं, तो उसको पेंट सेंटार्की बोल देते हैं। देन सेक्स सेंटार्की मीन्स 600 पीपल, 106, 6 सेंटार्की, तो 600 पीपल रूल करते हैं, तो उसको 6 सेंटार्की, 6 सेंटार्की वर्ड बोलेंगे, नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि इतनी सारी वोकैबुलरी आपके वर्ड्स काफी इंक्रीज होते हैं। तो आप इसको प्लीज प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज्ड रूट है। इसकी वजह से आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। ये आप देखोगे, आप रियलाइज करोगे। तो प्लीज इस वर्ड को समझिए और अपना रिस्पॉन्स मुझे आप भेजते रहिए। मैंने देखा है काफी लोग इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और दे आर लाइकिंग दिस वेरी मच।